Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, so let's begin with where we were in the morning. And we were discussing question number 3 and 4. Question number 3 was draft in dock water. Question number 4 was displacement in dock water. And in both the cases, draft in dock water, displacement in dock water, the basic fundamental principle remains that if I am given dock water draft, then using dock water draft, I will get displacement salt water. And conversely, if I am given displacement dock water, then I will get salt water draft. That is the basic, uh, shall I say, inference drawn from the two questions, from the two question number 3 and question number 4. And however, the the basic this thing remains that when a vessel moves from one density to another density, the the fundamental around which the entire principle revolves is that W remains constant, displacement does not change. What changes is the equivalent displacement. Equivalent displacement changes. And for that equivalent displacement corresponding, we find out the hydrostatic draft. And therefore, we could get a dock water draft or a salt water draft depending on which displacement we have entered in with. We could get a dock water draft if we enter in with saltwater displacement, and we could get a saltwater draft if we enter in with dock water displacement, equivalent displacement. Any doubts or any questions? Somebody was asking a question at that point in time when we broke off. No, sir. So ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो this will be our fundamental, and now using this fundamental we will do question number 8080. No, 82, sorry, question number 82. So let us open up question number 82. So सर ये जो बुक यूज कर रहे हैं सर, ये ऑपरेशनल लेवल वाला बुक है स्टेबिलिटी, कौन सा वाला बुक? ऑपरेशनल लेवल या मैनेजमेंट लेवल है सर, ये जो अभी 82 बोला सर आपने? हिंडशिप, एमबी हेडशिप, ओके एमवी मैं हिंडशिप, ओके एमवी हिंडशिप पे अब जा रहा हूँ सीधा. तो ए शिप हम खत्म कर चुके हैं, तो अब मैं खाली अब हिंडशिप पे आ गया हूँ. सो
We are on Hindship. And question number 82 is what we are at. सर एशिप And का पूरा टॉपिक खत्म हो गया कि ओनली दिस चेंज इन ड्रिफ्ट डेवलपमेंट? only change in trim. ओके सर. ओनली चेंज इन ट्रिम. अभी मैं खाली चेंज इन ट्रिम की बात कर रहा हूँ. चेंज इन ट्रिम में ए शेप खत्म हो चुका है. अब चेंज इन ट्रिम में हिंशिप पे आ गया हूँ अब मैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. सो एमवी हिंशिप is at an even keel draft of 9.35 meters. So, initial condition. MV Hindship is on an even keel draft of 9.35 meters. In dock water density 1004. Density dock water 1004. Calculated her drafts on reaching the sea. Final condition. What density are we going in? One point zero. We have to calculate the drafts there. So I am going from dock water to salt water. Okay. Which case am I referring to? Case 1 or case 2? Case 2. Case 2. In case 2, I will be trimming by stone. Trimming by stern. So that means I am going from Haldia. I am coming to Chennai. Finally, I will have a stern trim. My aft draft will be more than forward draft. And my hydrostatic draft will be less than 9.35 because I would have had a mean rise. We all agree to the statement that I'm making? Yes, sir. Yes. एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, क्या बोला? ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग फ्रॉम हल्दिया टू चेन्नई. ओके सर. I will be having a trim by stern at Chennai. Yes. And simultaneously, I would have also had a mean rise. So my Yes. hydrostatic draft at Chennai will be less than 9.35. Yes, sir. Because I would have incurred a mean rise. Is that okay with everyone? Okay, sir. Okay. So let me begin. Draft in dock water. That means reference of question number 3. Copied? Yes, sir. Okay. So मेरे पास 1004 का टेबल नहीं है. मेरे पास तो 1025 का टेबल है. तो मैं इस ड्राफ्ट के साथ 1025 के टेबल में घुसता हूं. एंड ये मेरा डॉक वाटर ड्राफ्ट है. तो मेरे को कौन सी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी? सॉल्ट वाटर. सर अभी तो सॉल्ट वाटर की मिलेगी, फिर चेंज कर लेंगे डॉक वाटर. सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट मिलेगी. सो 9.35 से मैं पढ़ता हूं और सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं.
वो आ गई मेरी 19902.25। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे ये डिस्प्लेसमेंट मेरी 1025 में है, तो 1004 में कितनी होगी मैं निकाल लेता हूं। ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एट हल्दिया है। इज दैट ओके? यस सर। ओके। अब क्योंकि मैं इवन कील पे हूं एट हल्दिया, तो देयरफॉर इस 9.35 मीटर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट्स में मैं जाता हूं एंड आई रीड ऑफ द एलसीबी। तो एलसीबी कितना आता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9.35? $72.175. क्योंकि इसका यूनिट मीटर में है, तो देयरफॉर ये मेरा एलसीबी है और मैं इसको चेंज भी नहीं कुछ करूंगा, बिकॉज मैं इवन कील में हूं। देयरफॉर मेरी ट्रिम 0 है। मेरी ट्रिम 0 है, इसका मतलब है एलसीबी इज इक्वल टू एलसीजी, बिकॉज मेरा ट्रिम का फॉर्मूला है W इंटू एलसीबी माइनस एलसीजी ओवर एमसीटीसी इंटू 100। तो इसमें मैं ट्रिम 0 डाल देता हूं, तो व्हाट डू आई गेट? एलसीबी इक्वल्स एलसीजी। Yes, sir. Okay. If LCB is 72.175, therefore LCG is also equal to 72.175. Is that okay with everyone? Okay, sir. Okay. अब मेरा हल्दिया का चैप्टर क्लोज हो जाता है। नाउ आई एम मूविंग माय वेसल टू चेन्नई। When I arrive at Chennai, my displacement will be constant. यस सर। So this displacement of mine, which was there at Haldia, will be the same when I arrive at Chennai. यस सर। Yes, sir. Okay. So I have arrived at Chennai now. W salt water.
is equal to 19494.5 tons. This is my displacement at Chennai. Is this part okay? Yes. Okay. My LCG 1 at Chennai will be the same as my LCG at Haldia because I have not shifted any weights. Do you agree? Yes, sir. So this is my final condition. Chennai condition, LCG remains the same. Now, for this displacement, I enter into the table. I get a hydrostatic draft. For my Chennai displacement. 9.183. Notice my hydrostatic draft has decreased. I've had a mean rise from 9.35. I have come down to 9.183. Yes, sir. Okay. For the same displacement, I will also read off MCTC. I will also read off LCB, calling it as 1 to create a distinction, and also read off LCF1. For this displacement or this draft, whatever you can take. You can take this displacement. Sir, MCTC 214.264. Okay. Sir, LCB 72.229. 72.229 meters. LCF 69.624. 624. ये समझ में आ गया कैसे आया ये सब तीनों corresponding to this displacement and this draft we find out the various MCTCs LCB and LCF and क्योंकि I am entering the table with salt water into salt water, so therefore everything that I am getting is for the salt water that is at Chennai.
Sir, So I I don't. just need to confirm MCTC. Is it 214.271? नहीं, it is 264. तो 271 आ रहा है. चेक करो. 26 डिस्प्लेसमेंट से लिया है मैंने सर. डिस्प्लेसमेंट सर, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको इस पे रखो बस. ओके ओके Yes, सर, वो ड्राफ्ट से लिया तो 271 आ रहा। हाँ, ड्राफ्ट से 271 आ रहा है. सो बिकॉज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट से लूंगा. ओके सर सर। डिस्प्लेसमेंट से लिया था सर. 264 आ रहा है. बिल्कुल ठीक है. इज दैट ओके विद एवरीवन? यस सर। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है. आई नो माई फॉर्मूला, दैट इज ट्रिम 1 is equal to W1 into LCB1 minus LCG1 over MCTC1 into 100. So trim 1 will be equal to W1, that is 19494.5 into LCB1 72.229 minus LCG1 72.175 over MCTC1, that is 214.264 into 100. So find out the trim 1. सर 0.049. How much? 0.049. 0.049. Everybody is getting the same answer? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Okay. So TA is equal to trim into LCF1 upon LBP is equal to 0.049 into LCF1 69.624 divided by 143.16 is equal to 0.024। 0.024. So TF is equal to final trim minus TA is equal to 0.049 minus 0.024 025। is 025. Now my trim is going to be by stern. So the sign of TA will be Negative. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। इसमें लोचा मत करना प्लीज. Trim is by stern, so TA has to be positive and TF will be negative. तो ये मैं लगा दूंगा फाइनल, ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पे. तो फॉरवर्ड आफ्ट 9.183 9.183 minus TF 0.025 plus TA
0.024. Find out the final draft forward and aft. So my final draft forward is 9.158 and my final draft aft is 9.207. Sir, we didn't consider mean rise because we took the draft from a hydrostatic table. Is that right? Absolutely right. So in Hindship, we will never be using the mean rise or the mean sinkage and therefore we'll never be using the TPC because we are using the final hydrostatic draft always. Either I Okay, will always have the final displacement with me or I will always have the final hydrostatic draft with me. And so therefore we don't use the TPC and therefore we don't use the mean sinkage or rise in Hindship. And that is the same funda which you will be using on board also. Huh? On board also you'll be doing like this. So whatever we did for A ship is applicable only for A ship. Don't mix that methodology over here. तो वो principally पूरा गलत हो जाएगा. okay, sir. सर अगर ये इवन कील नहीं होता तो फिर ट्रिम से एलसीजी निकालना पड़ता है ना पहले और वो बिल्कुल एलसीजी इज इक्वल टू एलसीजी 1. बिल्कुल ठीक. अगर ये इनिशियली मेरा इवन कील ना होता तो इसी फॉर्मूले से इसके डेटा से मैं उसको ट्रिम से एलसीजी निकालता और वो एलसीजी 1 के इक्वल होता. Is that okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Understood. So that is point number 1 to remember. Point number 2 to remember. Supposing ये मेरी trim 1 मेरी क्योंकि पॉजिटिव आई है, that means LCB1 is greater than LCG1. That means मेरी trim पॉजिटिव है. इसका मतलब है stern trim है. Yes, sir. अगर मेरी LCG1 is greater than LCB1. ट्रिम नेगेटिव हो जाए मतलब बाई हेड हो जाएगी सर. Absolutely right. Trim negative trim means down by head. Down by head means TF का साइन पॉजिटिव सर. पॉजिटिव, TA का साइन नेगेटिव. वो डाउन बाय हेड देगा. So comparison of the final LCB and the final LCG determines whether you will finally have a down by head condition or down by stern condition. तो सर हिंडशिप में जो ये केस हम लिखे हुए हैं बाइस्टन, अगर सर याद में तभी हम इससे मालूम कर सकते हैं कि ट्रिम हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है. फाइनल ट्रिम सर अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रिम बाइस्टन है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ट्रिम बाई हेड है. Agreed on that. लेकिन मेरे को इससे ये पता चल जाता है कि डबल मेरे चेक. हाँ डबल चेक बेसिकली सो दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक बेसिकली, ताकि मैं कहीं गलत नहीं जा रहा हूँ. इसलिए मैंने शुरू में ही पहले लिख दिया. तो ये प्रिंसिपल जो है मेरा स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बन रहा है, चाहे मैं ए शिप कर रहा हूँ चाहे मैं हिंडशिप कर रहा हूँ. But remembering always that in Hindship, I am doing the 1A and 2A cases because my LCF is aft of midship.
ये क्लियर है? इज दिस ओके? सर अगर सर इसमें जैसे अभी तो इवन कील है, तो हमने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी 9.35 हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग एलसीबी और एलसीजी निकाल ली, मतलब अगर नहीं होता तो निकालते, तो नहीं होता तो ये निकालते, निकालना पड़ता पूरा फिर पूरा कैलकुलेशन। निकालते, फिर पूरा निकालते। तो उस केस में सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता डेटा के लिए। बिल्कुल ठीक। तो पहले ड्राफ्ट इनिशियल ऑफ पहले माइनस, इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे, ड्राफ्ट ऑफ माइनस करेक्शन, हाँ एंड करेक्शन इज ट्रिम इनटू एलसीएफ अपॉन एलबीपी। एलबीपी। तो उस केस में सर जो एलसीएफ होगा वो हम लोग जो होगा वो, इसी का मीन ले लेंगे, वो मीन ड्राफ्ट का होता है। मीन ड्राफ्ट करेगा ना सर। और उसमें वो ये वाला तो एलसीएफ नहीं लेंगे ना सर, जो हमारा अपना क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग आएगा, नहीं, मीन ड्राफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। मीन ड्राफ्ट के करस्पॉन्डिंग जो आएगा। ठीक है मीन ड्राफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। सर, ओके सर। ओके, तो टेक डाउन 2 questions for practice at home. Take down 2 questions for practice at home. So the first question, MV Hindship is floating at draft forward 9.158, aft 9.207, in water of density 1.025. Sir, please repeat LCP density. 1.025. फॉरवर्ड ड्राफ्ट 9.158। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, अब मैं चेन्नई से निकाल रहा हूँ जहाज को। ओके, सो रिवर्स सेलिंग हो रही है। 9.158 forward, 9.207 aft. Calculate her drafts forward and aft in the following cases. Number 1, on reaching dock water, density 1.004. So 1.004. Correct. Calculate. So this is the first part. 1.004. Second part. 1.006. सर फर्स्ट पार्ट सर 1.004 में जा रहा है और सेकंड पार्ट में 1.006 में जा रहा है ना। And third part 1.000. तो बेसिकली मैंने रिवर्स कर दिया है। योर फाइनल कंडीशन इज बिकमिंग योर इनिशियल कंडीशन नाउ। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इंडिविजुअली प्लीज।
ईच क्वेश्चन को अलग अलग करना आराम आराम से, तसल्ली से, सो दैट कोई डाउट ना रहे मन में। मैं फाइनल कंडीशन की जो मेरी सिचुएशन है, सो आप फाइनल कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे फॉर्मूला करके। उसके बाद में दैट इज योर ड्राफ्ट इन चेन्नई, करेक्ट? यस सर, यस सर। Right? That's your draft in Chennai. So with that draft in Chennai, now you find out the initial data. That means you will need the MCTC, you will need the LCB, you will need the trim you have. So you will then calculate the initial LCG. Correct? ठीक है सर, करेंगे फिर। फिर इसको लेके आना यहाँ पे, पहले 1004 में लाना। आपका आंसर आपके पास ऑलरेडी है। Sir, so the weight and LCG will remain constant, उसको लेके calculate करेंगे। बस, perfect. W will remain constant and LCG will remain constant. उसको लेके करना है, लेकिन केयरफुल रहना ट्रिम के साइन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव पे, उस पे थोड़ा केयरफुल रहना। तो इसमें एलसीजी निकालना पड़ेगा ना पहले हमें? पहले एलसीजी इनिशियल कंडीशन का निकालोगे। यस सर, टोटल ट्रिम मालूम है, मैं निकालता हूँ। टोटल ट्रिम मालूम है तो एलसीजी निकाल सकते हो। यस सर। एक कैच रहेगा, उसको संभाल लेना बाद में, जब फाइनल कंडीशन में। प्लीज रिमेंबर, आपकी डॉक वाटर डेंसिटी जो है 1004 है, तो जो एमसीटीसी होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको संभाल लेना। क्योंकि वो जो होगा आपका, वो सॉल्ट वाटर वाला एमसीटीसी होगा जो आप पढ़ रहे होगे, उसको डिवाइड बाय 1025 मल्टीप्लाइड बाय डॉक वाटर डेंसिटी करना पड़ेगा टू गेट द एमसीटीसी ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है? ओके सर। सर सर एक हाँ जी, डाउट है पूछो। सर। इस क्वेश्चन में सर उन्होंने जो उसका वेट था ना जहाज का, वो कांस्टेंट रखा था। इफ सपोज अगर वो है ना कुछ चेंज कर देते उसमें, कुछ ना -300 कंज्यूम हो गया, तो सर उसमें अपन तो राम नहीं कहानी नहीं बदल हाँ, गई। ठीक है ठीक है ठीक। तो हाँ राम हाँ कहानी हाँ, बदल गई। बदल गया। तो अब आपने कहानी जो है सेकंड मेट पे ले गए। अब ये जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, प्लीज रिमेंबर कि कोई लोडिंग या डिस्चार्जिंग करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लागू होता है। अगर इस क्वेश्चन में मैं, ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है 19494। सपोजिंग ये जहाज हल्दिया में 2000 टन लोड करता, तो वो 2000 मेरा इसके ऊपर ऐड होगा। ये यस सर। 19,400 पे मैं 2000 ऐड कर दूंगा। सपोजिंग मैं लोडिंग कर रहा होता 2000 की, वो मेरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट बन जाती है हल्दिया की। दैट वुड हैव यस बीन सर, माय फाइनल आगे समझ। डिस्प्लेसमेंट एट हल्दिया। अब वो डिस्प्लेसमेंट लेके मैं चेन्नई पहुंच गया, वो मेरी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगी। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। एनी अदर डाउट? उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग सर। उस टाइप के क्वेश्चन तो आपके सेकंड मेट में हो चुके हैं। तो इसमें चेंज इन डेंसिटी के साथ। हाँ, ये तो आपके सेकंड मेट में आप कर चुके हो। ये योर क्वेश्चन ओके सर। नंबर, योर क्वेश्चन नंबर 60 टू 78 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर चुके हो। ओके सर। पर यकीन नहीं हो रहा मैं। नहीं यकीन हो रहा?
वो इसलिए नहीं यकीन हो रहा क्योंकि ये जो नजरिया दिखाया था मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का, वो आपने पहले नहीं देखा था। यस सर। तो इसीलिए मैं एक लेक्चर खाली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे लगाता हूँ, ताकि उसके फंडे पहले शेकअप करने पड़ते हैं मुझे पूरे। जब वो शेकअप कर देता हूँ फिर मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 पे इसका एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ना करूँ ये 3 एंड 4 का फंडा, तो क्वेश्चन नंबर 82 तो समझ नहीं आएगा कभी जिंदगी में। तो हिंडशिप इज लिटिल, शैल आई से, ट्रिकी दैट वे। और पूरी हिंडशिप जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे टिकी हुई है। द होल ऑफ हिंडशिप हैज बीन ओनली सेंटर्ड अराउंड 3 एंड 4। उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगी। ड्राफ्ट इन डॉक वाटर, डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर, उस पे है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत अहमियत देता हूँ, बिकॉज अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े कर देती है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो ये जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, इसको तसल्ली से करना, बड़े आराम से, ये तीनों क्वेश्चन। फिर इसको कल डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इनमें भी डाउट्स आएंगे आपके कुछ ना कुछ। सो देन वील डिस्कस दैट। ठीक है, ओके सर। चलो, ऑल राइट, सी यू देन, बाय। Okay, sir. Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर।